Hello guys, welcome to my YouTube channel. That's my knowledge part. And today we have to discuss regarding that question number 13 of letter writing and how to be written the formal letter writing. That too using the Western pattern of letter writing. Pattern we have to use of Western and we have to write the formal letter writing. Formal letter writing लिखना है, लेकिन प्रीवियस वीडियो के अंदर लेटर राइटिंग के बारे में बताया गया, लेकिन इंडियन पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग किस तरह से यूज करके वी हैड टू राइट द लेटर दैट वी हैव सीन. बट टुडे व्हाट वी हैव टू डू, we have to we have to see regarding writing letter only or letter writing only, but using the Western pattern of letter writing. And it is compulsory question in what we can say, especially that in Karnataka SSLC exam, either it is a midterm exam or it is a board exam now, and it is meant for 5 marks. In my previous video I have discussed regarding the model question paper, and I have to just discuss step by step how can be the first question, also the second question, and up to the last, it may be 13 or it may be 14. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझ लेना है, लेटर राइटिंग किस तरह से लिखना है, और लिखते समय आपको पहले मैटर समझ लेना बहुत जरूरी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. First of all, we have to understand what is the matter, and then only we have to start to solve the problem. That is very important. आपको into या multiply करने के लिए कहा गया है. अगर आप क्या करने लगेंगे, सबस्ट्रैक्ट करने लगेंगे, या उसके साथ साथ अगर एडिशनल करने लगेंगे, that will be the wrong method. Therefore, it is very important. क्या कहता है, imagine, कल्पना करो, understand, क्या बोल के, imagine you are रेशमा, अंडरस्टैंड, मानो कि वो आप रेशमा है, नहीं है फिर भी है, समझो, इमेजिन करना है. अरे इमेजिन करने के लिए क्या जाता है भाई, आंखें बंद करो, अपने आप को दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल क्या है हुआ एक मॉडल अपने आप को फील करो. या इट कैन हैपन, देयर इज नो डाउट एट ऑल. सपने देखने के लिए क्या तकलीफ है, क्या एतराज है. लुइस ड्रिस्कॉल कहता है कि क्या करो बाबा, अपने दिल के अंदर एक ऐसी जगह रखो जहां हमारे हमेशा जो सपने होते हैं ना, वो क्या होना चाहिए, या always are supposed to be what we can say fresh and live. In the same way, imagine you are Reshma or Ravish of Government High School Mangalore. There are so many government high schools are there. So just we have to imagine that we are the Reshma or Ravish from the Government High School of Mangalore, and what we have to do, we have to write a letter. हमें लेटर लिखना है. किनको लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के एडिटर्स जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर को आर्टिकल्स देते हैं, ऐसे लोगों को हमें एक लेटर लिखना है. क्या लेटर लिखना है, वी हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ड्राइंग हिज अटेंशन. उसका जो माइंड है, उसका माइंड या उसका अटेंशन जो है वो हमारी ओर खींचने के लिए. व्हाट फॉर वी आर ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटर, we are drawing the attention of the editor of the newspaper. What for? On the rising prices of commodities. commodities के जितने भी प्राइजेस है ना, वो दिन पे दिन आसमान को छूने जा रहे हैं. तो इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक ऐसा लेटर लिखना है ताकि न्यूज़पेपर के एडिटर का पूरा ध्यान आपकी ओर आपको खींचना है. Then how you have to write that letter? That letter must be written in such a way so that that newspaper editor or editor of a newspaper must be impressed. And remember my dears, it is formal letter writing. जितने भी लेटर्स हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं ना, वो इनफॉर्मल होते हैं, एंड जितने भी हम लेटर्स ऑफिसर्स को लिखते हैं वो फॉर्मल होते हैं. What exactly is the difference in between that formal letter writing and informal letter writing? I told you just now only. What it is? The letter which are going to write from a common clerk up to the Prime Minister, such type of the letters are always involved in formal letter writing. And the letters those we are going to write to our relatives,
दुश्मन क्यों नहीं रहता, लेकिन वो हमारा रिलेटिव्स है, फिर भी उनको लेटर लिखना है भाई, अंडरस्टैंड। और उस लेटर के अंदर क्या करना पड़ता है, लेटर के अंदर जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है उसके अंदर हमें फीलिंग्स एक्सप्रेस करने होते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में वैसा नहीं है, अंडरस्टैंड। फॉर्मल लेटर के अंदर ऐसा नहीं लिखना हाय हैंडसम हाउ आर यू बोल के लिखने की जरूरत नहीं है, हाय हैंडसम प्रिंसिपल हाउ आर यू, ओ माय गॉड, ये इट इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग फॉर्मल लेटर राइटिंग। अरे भाई फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर क्या लिखना है, फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर टीट फॉर टैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कई में, फॉर्मल लेटर राइटिंग में। अब वही फॉर्मल लेटर राइटिंग हमें लिखना है, और व्हाइल राइटिंग दैट फॉर्मल लेटर राइटिंग what the step we have to follow or what the pattern that we have to follow, that is very important. What I told you, pattern कौन सा लेना है, western pattern of letter writing. I think you might have understood or you might have came to know that what is the subject. I mean what letter, what type of the letter we have to write to the newspaper, I mean the editor of the newspaper. न्यूज़पेपर के एडिटर को कौन सा लेटर लिखना है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और सब्जेक्ट भी छुपा हुआ है। रिमेंबर माय डियर्स, जब भी कब आप फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हो, उस फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर आपको सब्जेक्ट दिया होता है, एंड इट्स सपोज टू बी हिडन इन दैट क्वेश्चन इटसेल्फ, एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। आपको क्या करना है, आपको फाइंड इट आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, और सब्जेक्ट क्या है ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट अगर आपको मालूम नहीं हुआ, इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू राइट एनी वन ऑफ द लेटर्स, and you are not what we can say the master of letter writing. And when you will have been told that you are the master of letter writing, if you have selected or if you have found it out what is the subject and what for we have to write a letter, then definitely you are supposed to be the master of letter writing. Otherwise, yeah, definitely you have been called as a what we can say, there is need not to explain. Come on. So what I have to do, what we are going to see, we are going to talk about what we can say, write a letter to the editor of a newspaper drawing his attention on the rising prices of the commodities. Commodities है, कौन से commodities है, the commodities are, which are those, अरे vegetables have not been called as commodities apart from the onion. ओनियन को एक कॉमोडिटीज के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि मेटल्स है, पर्ल्स है, डायमंड्स आर देयर, अंडरस्टैंड, गोल्ड इज देयर, सिल्वर इज देयर, प्लैटिनम इज देयर, even iron is there, copper is there, such type of the commodities have been called. Even what we can say, rice is there, corn is there, paddy is there, and apart from that what we can say, corns are there. Such type of the things have been involved into the commodities, and which are going to fulfill our daily needs. That is very important. Nowadays you don't misunderstand. Nowadays understand even that what you can say, the prices of the vegetables, they are really kissing to the sky. ये आसमान को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। इवन सिंपल थिंग के, सिंपल जितने भी थिंग्स है जो डेली यूज करते हैं, अंडरस्टैंड, उनके जो भाव है वो आसमान को छूने लगे हुए हैं। ये आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, understand, and how it will, understand how we can get rid of that one. So my dears, what I mean to say that my intention is to make you understand how to be written that a letter writing that is a formal, and after using that western pattern of letter writing. Now what it is that we have confirmed, what one is named Rashmi and another, sorry, Reshma, and another one is Ravish. Now we have to take any one of the names, and we have to, what it is there, our address, what it is there, our address is there, Government High School, Mangalore. And the address of the editor, what it is there, address of the editor is not over there, but even though what it is there, write a letter to the editor of a newspaper drawing his attention on the rising prices of commodities. If you are living in metropolitan cities, surely you will get the editors of the newspapers, there is no doubt at all. अंडरस्टैंड, अगर बड़े शहर के अंदर रहते हो, अंडरस्टैंड, मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको कहा जाता है, यानी कि डिवीजन जिसको कहा जाता है, अंडरस्टैंड, एक मोर देन व्हाट यू कैन से द 6 districts have been involved, and just that has been called as a division. And if you are living in that division, surely you will find everywhere such type of the, what we can say, the editors of the newspapers. There is no doubt at all. Now what it is there, how to be written, try to understand my dears, how to be written that formal letter writing, and after using western pattern of letter writing. मैं दोबारा कम से कम एक 5 या 6 बार मैं रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जितने भी मेरे लिसनर्स है ना,
howsoever that my listeners are there, my listeners must follow me, and as well as they should just watch my video up to the end, so that you can understand so easily how to be written or how to be used whatever that I teach in a better way in your general life. That is very important. Now I am turning towards the point. Now what we have to do? Remove the whole thing, and after removing the whole thing, what we have to do? Try to understand what exactly is the difference in between formal letter writing and informal letter writing. Formal letter writing, already I have told you in my previous video, one of the formal letter writing that I have just told you. But now what we have to do? We have to talk regarding the same matter. But what is in western pattern of letter writing कैसे use की जाती है? Now it is fixed. The place is fixed for date. There is no doubt at all. Understand? What sir it is? The date is fixed. The what you can say, the part of the paper or the place of the paper is fixed for the date. Either it is a formal letter writing or informal letter writing. But nowadays the place of the date also has been changed. And just we have to walk with the what we can say all the people. यानी जमाने के साथ चलना बहुत जरूरी होता है. अंडरस्टैंड? अगर हिंदुस्तान में दिवाली है, अगर कोई होली मनाता है, तो उसको क्या किया जाएगा? Totally he will have been declared as a madman. Understand? Hey, he has gone mad. In the same way they are supposed to be thinking. So therefore it is very good thing that we have to follow. Understand? Everywhere this is a pandemic. Day by day it is increasing of that corona. Corona has gone and Omicron has come, and nowadays it is very newly one of the brothers of that corona. What it is there? अरे बाप रे, डेल्टा, what you can say, डेल्टा है, डेल्टा क्रॉन. Understand? Omicron has gone, now delta cron has come. What a fantastic it is. How we have to say that is a fantastic. Understand? Yeah, just everyone is understand a lot of tense what should be done and what should not be done. So my dears, what I mean to say that, come on, what it is there now, what we have to do? We have to start that formal letter writing using the western pattern of letter writing. Western pattern of letter writing में क्या करना है? Try to understand. जहां से आप शुरुआत करते हो लेटर लिखने की, तब फ्रॉम से करना है. फ्रॉम है, फ्रॉम. ये कहीं में आता है? इट इज इन वेस्टर्न पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर्स. वेस्टर्न पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग के अंदर और इंडियन पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग के अंदर क्या करने का था? अरे भाई, इंडियन पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग के अंदर जिनको हम लेटर लिख रहे हैं ना, उनका एड्रेस पहले लिखने का था. अब वेस्टर्न पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग में क्या करना है? अरे भाई, जो लेटर लिख रहा है ना, उनका एड्रेस पहले लिखना है, बस. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. सब्जेक्ट विल बी द सेम, द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द लेटर राइटिंग मस्ट बी द सेम, एंड थैंक्स गिविंग आल्सो मस्ट बी द सेम, बट द प्लेस इज गोइंग टू चेंज. ओवर. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज देयर. नाउ व्हाट इज फ्रॉम? फ्रॉम इट इज. फ्रॉम व्हाट इट इज देयर? फ्रॉम रविश son of what? Sorry, understand, from Ravish son of Gilbert, understand. After that, from it is Ravish son of Gilbert. Understand how it is? The government high school, Mangaluru. Understand? Mangalore. Understand? बहुत ही खूबसूरत शहर है कर्नाटक के अंदर, मंगलुरु. चौ तरफ से क्या है? वह समुद्र के क्या है? बीचेस है, मालवे बीच, वेरी वेरी फेमस देयर एट मंगलुरु. Understand? And many tourists used to go there. So Mangalore. So what it is there? From Ravish Gilbert Government High School, Mangalore. It is the address of the person who is writing a letter. That is in Western pattern of letter writing. Now what is the second step? Second step is that to whom we are going to write a letter, his address must be written. Now what will be that? You try to understand. Over it is. Now from to the editor. Understand? Idiot, now you don't misunderstand. It's an editor. Okay, editor of newspaper. Understand? Yeah, there are so many newspapers are there. Understand? Generally in English, what are there? Newspapers or newspaper only. To the editor of newspaper. Same it is in Mangaluru. Understand? It's Mangalore. Okay. News it is. North, east, west, south. That has been called as a what we can say news and news. Newspaper. Try to understand, my dears. Those steps हमारे यहाँ complete हो गए. We have completed our 2 steps. Which are those 2 steps?
one is from and another one is to. In Indian pattern of letter writing, what the thing was going on? It was going on only to, first of all, to. It means Indian pattern of letter writing में जिनको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस पहले आ रहा था, लेकिन वेस्टर्न पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग में हम कौन लेटर लिख रहा है उनका एड्रेस पहले और किनको लिखने वाले हैं उनका एड्रेस बाद में. ये फर्स्ट थिंग है. अब कैसे होगा? फ्रॉम रविश, आई मीन द सन ऑफ गिलबर्ट, गवर्नमेंट हाई स्कूल मंगलुरु, in whatsoever the standard he is studying, that standard if you have written, yeah, it can be, understand, it can be increase the beauty of the letter writing. और पत्र लिखान की खूबसूरती अगर क्या करनी है, बढ़ानी है, जरा क्या है, मस्का लगाना बहुत जरूरी होता है. चाहे वो न्यूज़पेपर का क्या हो, एडिटर हो, या न्यूज़पेपर हो, टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, that is a Mangalore. There are so many newspapers. The Hindu is there, Deccan Herald also is there, the Indian Express also is there, understand, the Times of India also is there, and apart from that there are so many, what are there, newspapers are there in our India. So how to be written the letter to the editor, not only to the editor, how to be written that formal letter, regarding that I am going to say, and that too using the Western pattern of letter writing. Nowadays, I mean 20 years back, Western pattern of letter writing we rarely used to follow, but nowadays we are using, understand, ऐसा कहा जाता है, understand, दूसरों का शहर हमें बहुत खूबसूरत लगता है, understand, ठीक उसी तरह दूसरों का जो क्या होगा, यूनिफॉर्म है, दूसरों की पर्सनालिटी जो है, दूसरों की खूबसूरती जो है हमें बहुत पसंद आती है. हम कितने भी खूबसूरत क्यों रहे थे, but even though what will happen, understand, yeah, it is the tendency of the man, and it is the behavior of the man, and it goes on. Understand, it's natural, we can't stop it. Understand, उसको stop नहीं कर सकते हम, ये natural है, होते रहता है, दुनिया है, चलता है. Understand, so how it is, Ravish, son of Gilbert, Government High School Mangaluru, and the address of the person to whom you are going to write a letter, that is the second step. क्या है सेकंड स्टेप? एड्रेस लिखे. किनका लिखे? जिनको हम लेटर लिख रहे हैं ना उनका लिखे. अब क्या करना है? थर्ड स्टेप. व्हाट इज द थर्ड स्टेप? द थर्ड स्टेप इज ऑफ सब्जेक्ट. मेन थिंग. अब सब्जेक्ट में क्या आता है? just remove this whole thing, understand, only because of the shortage of the page, understand, just I am going to make you understand, and just I am writing over here so that you can understand properly what will be the subject. Now try to understand, my dears, what will be there. Now the third step. What is the third step? Try to understand. The first step I told you. First step, the address of the person to whom you are going to write a letter. Second step, the address of the person. First step, the address of the person who is writing a letter, and the second step, the address of the person to whom you are going to write a letter. Now the third step, what it is there? Third step is the subject. Understand, यही है अहम. It is a very very important thing in letter writing. Understand, generally in informal letter writing there is no subject. क्यों? अरे क्योंकि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हम हमारे रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, और वहां क्या होता है, वहां फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के होते हैं, और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते समय उसको लिमिट नहीं है, माय डियर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर्मल लेटर राइटिंग इज अ लिमिटेड लेटर राइटिंग, एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग इज एन अनलिमिटेड लेटर राइटिंग. अनलिमिटेड. अंडरस्टैंड, कितने भी क्या कर सकते हैं आप, आपकी फीलिंग जो है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं. समझ में आया क्या? कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वो जैसे भी एक्सप्रेस करेंगे ना, लेट मी सी लेटर ऑन. अंडरस्टैंड माय डियर रेशमा, जैसे तुम क्या कर चुकी हो, अंडरस्टैंड, घर से निकल चुकी हो, अंडरस्टैंड, मुझे तो उल्टियां ही होने लगी है. अरे बाप रे, ये कौन सा है यार? फीलिंग्स आर देयर, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अंडरस्टैंड, जैसे तुम गली गई हो, अंडरस्टैंड, वैसे पूरे मोहल्ले के लोग मर चुके हैं. ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आता है ये. और किस तरह से इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखी जाती है उसके बारे में हम देखने, वी विल स्टडी इन डिटेल. बट फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है? फॉर्मल लेटर राइटिंग के तरह ऐसा नहीं लिखना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर्स. अगर फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर ऐसा लिखेंगे, अंडरस्टैंड, डियर मिसेस, डियर सो एंड सो, बाप रे बाप, व्हाट विल बी देयर? अरे बाप रे, देने के अलावा लेने पड़ जाएंगे. ये it was one of the, what you can say, one of the examples of comics. You just please don't take it serious. So please come to the point. What exactly I am going to tell you, that is very important. As you know, my dears, in teaching, examples are very important. And example is really, it has been called as if one of the, what we can say, it is, yeah, it is a salt in the curries or whatever the things we are going to make to eat it.
So it is very important. And apart from that salt, if you have not inverted the salt in salan or it is in curry, then what will happen? It will be tasteless. In the same way, in teaching and learning process, examples are very important. Understand? So try to understand, my dears. So what I mean to say that from first step, second step, third subject. Arey, what is the subject? Subject is the heart. अंडरस्टैंड एंड हाउ इट इज दैट, क्या करना है सब्जेक्ट के अंदर, ऑलरेडी मैं बताया, क्या बोला, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर to requesting him or her to draw his attention towards the increasing prices of the commodities. कमोडिटीज के क्या है, वह प्राइजेस जो है क्या होने जा रहे हैं, आसमान को छूने जा रहे हैं, उनके बारे में लेटर लिखो बोल के आपको उसको रिक्वेस्ट करना है, वो ताकि क्या कर सके, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर के अंदर वो आर्टिकल दे सके और पूरा नॉट ओनली द व्हाट यू कैन से द अटेंशन ऑफ द पर्सनल holders or the businessmen will change, or also directly or indirectly that government will think over such type of the problems. That is the main intention that behind writing the letter of what we can say, drawing the attention of the editor of the newspaper towards what we can say the increasing prices of the commodities. Now subject, a request letter, a request letter. Try to understand, my dears. A request letter to give attention, to give attention, to give attention, to give attention towards the increasing, towards the increasing prices, to increasing prices of commodities over what it is that these are the what I mean to say that this is the subject, commodities. Try to understand, my dears, what it is that this is the subject. What is the subject? The subject is that whatever the thing is written into letter and what for we have requested, that what we have to do, brought, that must be brought into the letter, that is commodities. Understand? Commodities. Try to understand, my dears. कैसे commodities है? विभूति पटेल. Understand what he has declared? He is one of the economists, and what he has said, that only the onion, understand, supposed to be involved into the commodities apart from the vegetables. Vegetables, yeah, it is our daily need, but even though, understand, what has been decided by the government, it's supposed to be followed by each and every citizen of that particular country or province. That is very important. Now कैसे सब्जेक्ट में क्या है बाबा, सब्जेक्ट इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या, बट इवन दो इन सब्जेक्ट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव रिक्वेस्टेड, इट मस्ट बी, अंडरस्टैंड, कम इनटू द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट में क्या है, रिक्वेस्ट लेटर, रिक्वेस्ट करना है भाई, क्योंकि वो भी एक क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ही इज आल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. वी हैव टू रिक्वेस्ट, अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू रिक्वेस्ट, वी हैव टू रिक्वेस्ट दैट एडिटर देख लिखना है तो लिखना तो, अरे दैट इज नॉट द वे यार, वी आर ह्यूमन बीइंग. अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू रिक्वेस्ट. एज यू नो माय डियर्स, जुबान एक ऐसी चीज है, अंडरस्टैंड, अगर अच्छी तरह से क्या करोगे, जुबान को चलाओगे, कसम से कहता हूं आपको फल ही फल मिलेंगे. अगर बुरी तरह से चलाओगे तो क्या हो जाएगा, यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट वन. अंडरस्टैंड, अच्छे के साथ बैठोगे तो गिन गिन के तारीफ हो जाएगी, और बुरों के साथ बैठोगे तो गिन गिन को क्या हो जाएंगे, गालियां खाएंगे. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? उसको तो ऑप्शन है नहीं है. चलो कैसे बाबा, try to understand. Subject है, a request letter to give attention towards the increasing prices of the commodities. ये subject में आया. Now what is the fourth step? What is the fourth step? The fourth step is that of the descriptive part of letter writing. फोर्थ स्टेप जो है वो बॉडी ऑफ द लेटर राइटिंग बोल के भी डिक्लेयर की जाती है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग बोल के भी किया जाता है. Try to understand, my dears, what I am going to tell you. I am just following the western pattern of letter writing over. मेरा इंटेंशन एक ही है, मेरे जितने भी लिसनर्स है, मेरे जितने भी क्या हुआ वीडियोस फॉलो करते हैं और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करना है, उनको वेस्टर्न पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग, दैट टू फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे होती है उसके बारे में आपको फोकस कर रहा हूं. Try to understand, and therefore I requested earlier,
What I requested you that you have to watch my video up to the end so that you can understand. As you know, my dears, if you follow such type of the steps, definitely you are the master of 5 marks. There is no doubt at all. Nobody can, what you can say, reduce your marks. कोई भी reduce marks नहीं करता क्योंकि steps follow करते हैं हम, and we have the rights. Understand? So therefore, it is very important that you have to follow the rules and regulations. Surely you will get out of marks. There is no doubt. Understand? Come on. Subject is over. Now, descriptive part of letter writing. In what we have to do? Same. डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो हम फॉर्मल लेटर राइटिंग में इंडियन पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग यूज करके जिस तरह से लिख रहे थे ठीक उसी तरह लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. दैट इज ओवर. नाउ प्लीज, सब्जेक्ट इज ओवर. नाउ द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग. What it is the descriptive part of letter writing? Descriptive part of letter writing has been called as a body of letter writing, and body of letter writing also has been called as a descriptive part of letter writing. Now it is a try to understand. ये third step हो गया subject. Fourth step क्या है वहाँ? Descriptive part of letter writing it is. Understand? Descriptive part of letter writing. Understand? कौन सा? Formal letter writing, and that too using a that too using a western pattern of letter writing. Understand? Yes, come on. Descriptive में क्या कैसे लिखना है? Third step में ये descriptive. Suppose assume it is descriptive. क्या लिखना है? Respected sir. उसको respect दे के बात करना है बाबा. Understand? Respect दे के बात करोगे तो दुनिया जीतेंगे आप. As you know, my dears, I told you in my earlier videos, if you smile at the world will smile at you. Understand? If you hate to the world will hate you. And if you kick to the world will kick you. There is no doubt at all. Understand? इसीलिए क्या करना है बाबा? थोड़ा अंडरस्टैंड संभल के रहना है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अंडरस्टैंड? कैसे? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ना हाथी है ना घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है. पैदल तो जाना नहीं है. अंडरस्टैंड? 4 लोगों के कंधों के ऊपर जाना है. पैदल ऐसे कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल इफ द मैन हैज डाइड एंड हाउ ही यूज्ड टू गो बाय वॉक? व्हाट अ डेंजर इट इज. It is not so. Understand? Come on. Respected sir or madam. Respected sir or madam. What you can say?